Hello friends, welcome back to my channel Aspire Brain. If you want to learn about government exam like junior office assistant, IT, data entry operator, junior clerk and any other state competitive exam, so you have come to the right place and do make sure you will follow my study channel. So guys, let's start with today's video. So today's video is based on introduction of computer. In this video, we will cover generations of computer, classifications of computer and application of computer. So guys, अगर हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो आप देखें बेसिकली द टर्म जनरेशन refers to the how hardware and software has worked over the time. So इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एक्चुअली किस लिए है। वो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर काम करता है। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक बार पेन ले लूं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो समझने में। लो, यस, a generation refer to the state of improvement in the development of system. Got it? ये जो मैंने अभी बात कही, कंप्यूटर आर बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिफोर जनरेशन। जनरेशन से पहले जो है कंप्यूटर किससे बना था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एंड each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally change the way computer operates. तो यही हमने जाना कि किस तरह से जो है कंप्यूटर में चेंजेस आए हैं। पहले इसका साइज बड़ा होता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, इसके लिए हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में स्पेस चाहिए होता था। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी चेंजेस आ गए और एक बहुत बड़ी कमरे जितनी मशीन जो है एक पाम टॉप, एक छोटे से लैपटॉप, एक फोन के जितनी हो गई है। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। सो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 टू 1956। इसमें क्या यूज हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा आपको याद रखनी, एक तो डेट्स, दूसरा डिवाइस नेम और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज हुई। एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए यूज होता था। इसकी स्पीड जो है 333 माइक्रो सेकेंड्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड वाज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मशीन लैंग्वेज वाज जीरोस एंड वंस, बाइनरी जो लैंग्वेज है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ फीट एंड इट वाज नॉन पोर्टेबल। एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल एनिक, यूनिवेक, मार्क 1 एटसेट्रा। सो कम टू द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड जनरेशन जो है इसका टाइम जो है वो 1956 से 1963 तक है। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था made of semiconductors. So vacuum tube is replaced by transistor. मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इसमें स्टोरेज डिवाइस था और इसकी जो स्पीड थी दैट इज 10 माइक्रो सेकेंड्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, प्लस मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर है, and portable and generate less amount of heat, used for commercial purpose production, and PDP-8, IBM 1401 etc. इसमें यूज हुआ। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इट इज 1964, 1964 से 1971 के बीच का टाइम रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज हुआ है, मेड ऑफ सिलिकॉन चिप्स, millions and thousands of transistor is converted in a single chip that is called IC, that means integrated circuit. मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम, जो प्राइमरी स्टोरेज है इसमें मैग्नेटिक कोर है एंड 100 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड। रियल टाइम सिस्टम जो है इसमें यूज हुआ एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाई लेवल लैंग्वेज फोटोन, कोबोल्ट एंड एल्गोल। और इसके साथ साथ जो इसका
कंज्यूम्ड लेस पावर है, जो करेक्टरिस्टिक्स है इसमें लेस पावर को ये कंज्यूम करता था, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनसीआर 395, B6 एंड 500। तो थर्ड जनरेशन में आप देखो कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है कि एक वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर में आया, ट्रांजिस्टर से फिर इंटीग्रेटेड सर्किट में आया, आईसी एक बिल्कुल छोटी सी चिप होती हैं, सभी आपने देखा होगा टीवी में लगी होती हैं, आपके फोन में लगी होती हैं, बिल्कुल छोटी सी चिप होती है। रियल टाइम सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज हुई, कंज्यूम्ड लेस पावर, पावर कंजप्शन इसमें काफी कम था, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। नाउ कम टू द फोर्थ जनरेशन, दैट इज लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1970 टू प्रेजेंट इसका जो जनरेशन का टाइम है, और स्विचिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और कहीं कहीं पे ये VLSI VLSI भी होता है, तो दैट इज कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, विंचेस्टर डिस्क हम जिसे कहते हैं, एंड 300 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड है। टाइम शेयरिंग जो है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, दैट मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लस पास्कल, एडा, कोबोल एंड फोटोन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था। मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल है। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज distributed system, for example, Intel 4004 chips and Macintosh. Now come to the fifth generation, that is present and beyond. And in fifth generation of computer, super large scale of integration, sometime इसे हम super large scale of integration भी कहते हैं, और इसको ULSI भी कहते हैं, that is ultra large scale of integration. ऑप्टिकल डिस्क इसमें स्टोरेज डिवाइस था। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें है, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटरकोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनेबल मेगा चिप्स। सो एप्लीकेशंस जो इसमें है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स। तो दीज वर द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन हम में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते हैं, सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, millions of silicon chips combined in a single chip, and fourth generation it was a very large scale of integration, and the last fifth generation, that is SLSI or ULSI, very large scale of integration, is in fourth generation, and ULSI, ultra large scale of integration, in fifth generation. So guys, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जनरेशन की डेट कंफर्म होनी चाहिए, और जनरेशन जो है उसमें स्विचिंग डिवाइसेस कौन से थे, और इसके साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन से यूज हुई, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और some things important to remember, that is tits bits. So first one is Siddhartha was the first computer developed in India. इसमें काफी सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सिद्धार्था जो है इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, लेकिन अगर वर्ड की बात करूं तो इट वाज द एबिकस कंप्यूटर जो कि चाइना में इन्वेंट हुआ था। द सेकंड वन इज एलन ट्यूरिंग, इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। So remember, that is modern computer. So father of modern computer is Alan Turing, and father of computer is Charles Babbage. So he was the old, और न्यू में अगर हम बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर। अगर मॉडर्न कंप्यूटर का पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग है, अगर नॉर्मल फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो दैट इज चार्ल्स बेबेज। जॉन वॉन न्यूमैन की हम बात करें तो ही वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर 1948। ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरी, ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1958 Jacques Claire Kilby and Robert Nius invented an IC। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसको किसने इन्वेंट किया है, इसके नाम भी आपको याद रखने हैं, और ये कब इन्वेंट हुए हैं, 1958 में। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज वेल एज द
सिक्वेंशनल, जो ओल्डर जनरेशन थी उसमें पैरेलल यूज होती थी एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अब अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती हैं वो आपकी पैरेलल एज वेल एज सिक्वेंशनल, पहले सिक्वेंशनल में जाती थी लेकिन आज की डेट में जो है ये पैरेलल में आती है। सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So computer are mainly classified in three types as follows. That is based on based on size, based on work, and based on purpose. Based on size, microcomputer, mainframe computer, mini computer and supercomputer. बेस्ड ऑन वर्क की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो अभी हम इसको एक एक को समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेस्ड ऑन साइज अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द लीस्ट पावरफुल yet the most widely used and are also called portable. So microcomputer consists of three basic categories of physical equipments, that is system unit, input output unit, and memory unit. For example, some types of microcomputers are as follow. You can see below. Desktop computer और पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहला जो है वो डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है। दीज आर स्मॉल, वो स्मॉल होते हैं साइज में, रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर, एंड दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट एक्सेट्रा। तो इस तरह के कंप्यूटर जो है एक तो साइज में छोटे होते हैं, दूसरे जो है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जो है इसमें वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है। Now, second one is laptop. These computers are also known as ultrabook or a notebook. These are portable and lightweighted. They include rechargeable battery, so these can work anywhere. Now, next one is handheld or palm top. Handheld or palm top की अगर हम बात करें तो computer these are the smallest are designed to fit into the palm. So these are also known as palm top, and they are practical for certain functions such as phone books and calendars. They use the pen for input instead of keyboard. For example, PDA, personal digital assistant. तो हैंड हेल्ड और palm top एक हाथ की हथेली जितना छोटा आपका डिवाइस होता है जिसको रन करने के लिए हमें पेन की इनपुट के लिए पेन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द थर्ड नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें तो दैट इज टैबलेट कंप्यूटर। हम सभी जानते हैं दे हैव की फीचर्स ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड माउस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज अ वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन कंप्यूटर की मैं बात करूं तो these are computers dedicated to a user or group of user engaged in business or professional work. It includes one or more high resolution displays and a faster processor than a personal computer. So guys, ये जो points थे ये आपके किसके थे? माइक्रो कंप्यूटर के। और अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास था इसमें मिनी कंप्यूटर। दीज आर स्मॉलर इन साइज। मिनी कंप्यूटर मेरे से ही कंफर्म हो जाए कि साइज में छोटे होते हैं, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से फास्ट होते हैं और उसकी साइज कॉस्ट में कम होते हैं। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क लाइक engineering and computer aided design, CAD calculations, but now they are being used as central computer which is known as server. Mini computer are IBM 17, DEC, PDP 11, HP 9000, etc. Now next one is the mainframe computer. Mainframe computer जो है these type of computers having large internal memory storage and comprehensive range of software. Mainframe computer serves as a backbone for the entire business world. Got it? And it is considered as the heart of a network of computer or terminal that allow a large number of people to work at the same time. Mainframe computers are IBM 370, IBM S390 and Univac 1110, etc. Now last one is
supercomputer. These are the fastest and most expensive machine. तो आप इससे ही समझ सकते हैं सुपर कंप्यूटर से. And they have high processing speed compared to other computers. Supercomputers are most useful large in size and memory. Supercomputers are most powerful. एक तो ये अधिक पावरफुल है, large in size and memory, plus compared to all other computers. The speed of supercomputer are measured in फ्लॉप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो कैसे मेजर की जाती है. वो मेजर की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, तो फ्लॉप्स. एंड supercomputer are used for highly calculation intensive tasks such as weather forecasting, nuclear research, military agencies, and specific research laboratories. Cray-1 was the first supercomputer introduced by Seymour R. Cray in 1976. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्डेस्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था. तो it is introduced by Seymour R. Cray in 1976 and it was the Cray-1, first world's first supercomputer. And the Param was the first supercomputer developed in India. तो all over the world जो है वो है Cray-1 और in India है वो है Param. It is developed in 1990. Param Ishan is the latest machine in the series of Param made by CDAC and IIT Guwahati on 20th of September. So these three part is very important. 3 point is very important for examination point of view. Now come to the based on computer. On the basis of computer, computers are categorized as follows. For example, analog computer. These computers carry out arithmetic and logical operation by manipulating and processing of data. For example, speed motors, seismograph, etc. Analog computer can perform several mathematical operations simultaneously. It uses continuous variable for mathematical operations and utilize mechanical or electrical energy. The second one is digital computers. These do work by calculating the binary digits, and a digital computer not only performs a mathematical calculation but also combine the bytes to produce desired graphical sounds. Desktop PC and hybrid computer की बात करें तो these are the combination of analog and digital computers. Machine used in hospitals like ECG and dialysis are the commonly used hybrid computer. Based on purpose की अगर हम बात करें तो on the basis of purpose computer are categorized as follows. General purpose computer. General purpose computer are those computers which are used to solve a variety of problems by changing the program or instructions, for example, to make small database calculation, accounting, etc. And special purpose computer. Special purpose की अगर मैं बात करूं तो special purpose computer are those computers which are used to solve a single and dedicated types of problems, automatic aircraft landing and multimedia computer, etc. And now the application of computer. First one is banking. Computers are based in bank for electronic money transfer, banking, deposit and vouchers, bank sheet, etc. Education. Computer is a very effective tool which can be used for teaching and learning, result processing students, data processing, notes preparation, etc. Entertainment. Different types of entertainment fields such as multimedia, filmmaking with animations, graphic, audio, and visual design are done with the help of computer. Offices. Computers are used for preparing reports, storing, deleting reports, updating reports, etc. Advertisement. Computers are used in the different field of advertisement such as business advertisement, film advertisement, education advertisement, etc. Now the business. Computers are used in business for accounting, keeping all record up to the
Date. Artificial intelligence. AI is an area of computer science that emphasize the creation of intelligent machine that work and react like human. Some of the activities computers with AI are designed for include speech recognition, learning, planning, problem solving, and robotic. की अगर robotics is the branch of engineering and science that deals with the design, constructions, operations, and use of robot as well as computer system for their control, sensory feedback, and information processing. So guys, these were the classification of applications of computer. Now some important point to remember. These are quantum computer was first introduced by Richard Feynman. It uses quantum mechanical phenomena. It is the fastest computer imitating brain working. Nanocomputer is a general term used to describe a computer smaller than a microcomputer, usually about the size of credit card. For example, Raspberry Pi, which could be used in school to teach science to children. Pratyush, India's fastest and first multi पेटाफॉर्म अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्युष was unveiled at Pune based Indian Institution of Tropical Metropoly and Pratyush has 6.8 pf ये है petaflops computational power instead at two Moments Institutes 40 petaflops. HP facilitates 8 IITM Pune and 2.8 petaflops facilitates and NCMRWF Noida. Pratyush is fourth fastest supercomputer in the world dedicated for weather and climate research. Note PF is a measure of a computer's processing speed. So guys, these were the important part of introduction of computer, that is generation of computer, classification of computer, and applications of computer. So guys, in this video हम यही cover करेंगे और next coming video में हम एक और चैप्टर कंप्यूटर का कवर करेंगे. गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. अगर मुझे कुछ चेंज करना है, स्पीड बहुत ज़्यादा जा रही है, कम्युनिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो.